हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। आज हम यहाँ पे जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का जो कंप्यूटर का सब्जेक्ट है वो यहाँ पे अपन टॉपिक कवर कर रहे हैं एमएस पावर पॉइंट का। ओके, जो असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट है, चाहे जनरलिस्ट हो या फिर स्पेशलिस्ट हो, अगर कंप्यूटर के क्वेश्चन आते हैं तो उसके पूरे क्वेश्चन मैंने यहाँ पे कवर कर दिए हैं। और अभी कुछ इंपॉर्टेंट प्लस एक्सपेक्टेड क्वेश्चन मैं यहाँ पे फर्स्ट जनवरी से स्टार्ट करूंगा। ओके, तो जिन्होंने अभी तक पहले के वीडियो नहीं देखे, वो पहले के वीडियो भी देख लीजिएगा ताकि आपकी और अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। और एक वीडियो को मिनिमम 1 से 2 बार देखिए, क्योंकि एक बार देखने से यहाँ पे कुछ भी नहीं होने वाला। ओके, तो मिनिमम 2-3 बार एक वीडियो को देखिए, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लॉन्ग नहीं है, 10-10, 12-12 मिनट का ही वीडियो है, तो आप उतना कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और जिन्होंने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो, ताकि नोटिफिकेशंस थ्रू आपको इम्पोर्टेंट प्लस एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी मिल जाए। ओके, तो पावर पॉइंट के क्वेश्चंस आज कवर करेंगे, देन इसके बाद और फिर से जो क्वेश्चंस है वो भी कवर करेंगे, प्लस इम्पोर्टेंट प्लस एक्सपेक्टेड। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपन। तो देखिए यहाँ पे क्या बोला है कि विच फीचर्स अलाउज यू टू अप्लाई द सेम डिजाइन फॉर टू ऑल स्लाइड इन प्रेजेंटेशन। अगर सेम डिजाइन अप्लाई करना है तो उसके लिए अपन यूज करते हैं स्लाइड मास्टर। ओके, नेक्स्ट सेकंड, व्हाट डज द प्रेजेंटर व्यू अलाउज यू टू डू प्रेजेंटेशन। द आंसर इज व्यू द नोट व्हाइल प्रेजेंटिंग। ओके, next third, in MS PowerPoint which of the following is not type of transition effect। तो आंसर इज टेक्स्ट बॉक्स। देखो, फेड होता है, वाइप होता है एंड बाउंस भी होता है, लेकिन टेक्स्ट बॉक्स नहीं होता है। नेक्स्ट फोर्थ, हाउ कैन यू ऐड कस्टम एनिमेशन टू द स्लाइड। तो कस्टम एनिमेशन अगर अपने को ऐड करना है तो कहाँ पे जाएंगे, यूज कस्टम एनिमेशन पैनल। ओके, next, fifth, what is the default slide layout when you create a new presentation? The answer is title slide. Okay, different टाइप के स्लाइड्स रहते हैं, जैसे ब्लैंक रहता है, टाइटल स्लाइड रहता है, टाइटल एंड कंटेंट, टू कंटेंट, ऐसे डिफरेंट टाइप के स्लाइड्स रहते हैं, लेकिन जो डिफॉल्ट रहता है वो रहता है टाइटल स्लाइड। ओके, नेक्स्ट सिक्स, which tab allow you to insert chart, picture and text boxes in PowerPoint? तो ये आता है insert टैब में। ओके, next, seventh, which features in PowerPoint let you record narration for your slides? The answer is record slideshow. Okay. Next, eight, how do you apply a background color to slide in PowerPoint? The answer is use the format background option. Next, ninth, what is the purpose of refresh timing features in PowerPoint? The answer is set the duration for each slide. Okay. Next, 10th, how can you change the order of subject in PowerPoint? The answer is use the selection panel. Next, 11th, which of the following can you use the add hyperlink to the PowerPoint slide? Answer is text, shape and picture. ये तीनों पे अपन लगा सकते हैं। Next, 12th, what is the function of smart guide in PowerPoint? The answer is align object automatically. Next, 13, which of the following options help you to save your PowerPoint presentation as a video? आंसर इज फाइल, एक्सपोर्ट एंड क्रिएट वीडियो। मतलब फाइल में जाके एक्सपोर्ट करके ऑप्शन आएगा, उसमें क्रिएट वीडियो का जो ऑप्शन आएगा वहां पे क्लिक करना है। नेक्स्ट 14, इन पावर पॉइंट व्हाट इज द सिलेक्शन पैन यूज्ड फॉर। तो सिलेक्शन पैन किसके लिए यूज करते हैं, टू मैनेज ऑब्जेक्ट इन स्लाइड लाइक एज हाइट, शो एंड रिकॉर्डर। नेक्स्ट 15, हाउ कैन यू अप्लाई कस्टम स्लाइड साइज इन पावर पॉइंट। आंसर इज डिजाइन मेनू में स्लाइड साइज। ओके, next 16, which of the following is true about slide layout in PowerPoint? Answer is layout can be customized. Next 17, how do you insert a new slide in PowerPoint? Answer is click the new slide button on home tab. Next 18, what is the maximum number of slides you can include in a PowerPoint presentation? Answer is no limit. There is no limit for insert power PPT, means slides. Okay, next 19, what is the primary function of animation pan in PowerPoint? Answer is control the order and timing of animation. Next 20, how can you use the custom slideshow feature in PowerPoint? Answer is to create a specific order of slide to present. Next 21,
Which of the following is used to set the timing for slide transition in PowerPoint? The answer is transition tab. Next 22. What is a slider master in PowerPoint? The answer is a template for designing slides. Next 23. How can you insert a table in PowerPoint slide? Answer is from insert tab and click table. Next 24. What is the notes span in PowerPoint used for? Answer is add speaker note and comment. Next 25. How can you apply a transition effect to a slide in PowerPoint? Answer is select the transition tab and choose an effect. Next 26. Which of the following is not a transition effect in PowerPoint? तो देखो पुश होता है, एक्सपांड पुश होता है, वाइप होता है, जूम भी होता है, लेकिन एक्सपांड नहीं होता है. तो आंसर क्या है? एक्सपांड. नेक्स्ट 27. What is the default file extension for PowerPoint presentation? The answer is .pptx. Next 28. How do you insert a video into PowerPoint presentation? From insert tab, click video. Next 29. How can you set a password for your PowerPoint presentation? The answer is file menu में info में जाके protect presentation and encrypt with password. Next 30. What does the format painter feature in PowerPoint? तो format painter क्या करता है? Copy the formatting from one object and applies it to another object. Next 31. How can you quickly align object on slides in PowerPoint? The answer is use the align button on format tab. Next 32. How do you insert a hyperlink to slide in PowerPoint? The answer is use insert tab and hyperlink option. Next 33. Which of the following is a method to insert a shape in PowerPoint? The answer is from insert tab, click shape. Next 34. Which of the following is the best option to display a PowerPoint presentation automatically without any manual intervention? The answer is set transition, slide transition timing. Next 35. What does action button features in PowerPoint allows you to do? The answer is create interactive button to navigate between slides. Next 36. How can you add a background music file to a PowerPoint slide? The answer is insert audio and audio from file. Next 37. What feature help you organize slide in PowerPoint? The answer is slide sorter view. Next 38. What does play in background option do when added to audio file in PowerPoint? The answer is play the audio automatically during the presentation. Next 39. Which of the following feature is used to create a custom path for animation in PowerPoint? The answer is motion path. Next 40. Which shortcut key is used to smart the slide show from current slide in PowerPoint? The answer is Shift plus F5. Next 41. How can you add background image to PowerPoint slide? The answer is format background and picture or texture field. Next 42. How can you insert a text box into the PowerPoint slide? The answer is use insert tab and click text box. Next 43. What is the function of slideshow tab in PowerPoint? The answer is to run the slideshow and set up the presentation option. Next 44. In PowerPoint, what is zoom feature used for? The answer is to focus on specific slide or part slide during the presentation. Next 45. How can you insert a 3D model into a PowerPoint slide? Answer is use the insert tab 3D model. Okay. Next 46. Which of the following is used to hide a slide? Answer is right click the slide and select hide slide. Next 47. How can you
add subtitle to your PowerPoint presentation? The answer is use the subtitle feature under the slideshow tab. Next 48. In PowerPoint, what does the format painter features do? ये अभी repeat हुआ है. Copies formatting from one object and applies to another object. Next 49. How can you convert PowerPoint presentation to a PDF? The answer is file, then save as and click on PDF. Next 50. What is the maximum number of animation can you apply to a single object in PowerPoint? The answer is no limit. Okay. नेक्स्ट जो वीडियो रहेगा वो अपना सब्जेक्ट वाइज एमसीक्यूज अपन सॉल्व करेंगे और 4 वीडियोस बनाएंगे सब्जेक्ट वाइज के एंड देन उसके बाद इंपॉर्टेंट प्लस एक्सपेक्टेड भी बनाएंगे कंटिन्यू में। तब तक के लिए थैंक यू।